Guys, welcome back to the channel. So last class we have started with viral diseases. In that we have started with primary herpetic gingivostomatitis. We have seen that it is mainly seen in children and young adults. It is the painful vascular lesion and rupture to form ulcer, that is foul smelling ulcer. We have seen that cervical lymphadenopathy occurs and fever, malaise, ये सब होता है. And then we have seen that herpes simplex virus HSV1 या तो डायरेक्ट हो सकता है या तो एयरबोर्न वाटर ड्रॉपलेट से होता है. Then we have seen about the antibodies. We have seen the recurrent infection of it, and we will be starting with herpetic whitlow. Okay, let's start. Herpetic whitlow, an occupational hazard among dentists before the use of examination gloves. तो क्या होता था जब वो नेकेड हैंड से इन्फेक्टेड पर्सन को डायग्नोस या ट्रीट करके व्हेन दे कम टू द नेक्स्ट पर्सन दे ट्रांसफर दिस HSV1. तो इट हैपन्स इन द टिप ऑफ द हैंड जो उनके होता था. सो जब तक एग्जामिनेशन ग्लव्स डिस्कवर नहीं हुए थे या यूज़ में नहीं आए थे, नॉट डिस्कवर्ड, इट वॉज नॉट यूज. It represents a primary HSV1 infection, although it can be recurrent secondary infection. Emerging 2 to 10 days after contact, the lesion are painful red vesicle and pustules that rupture into ulcer, and it lasts as long as 2 months. तो सबसे ज़्यादा long duration is herpetic whitlow, 2 month तक last करता है. Okay. Now, some individuals develop axillary lymphadenitis and pain in forearm causing disability. Lesion may reoccur at the same site. तो फिर इसका recurrence भी same जगह पे होता है, at the same site. Okay. Now, differential diagnosis. Necrotizing ulcerative periodontitis और pemphigus vulgaris, क्योंकि ये दोनों वेसिकुलर और अल्सरेटिव लीजन्स होते हैं. ना एरिथेमा मल्टीफॉर्म में जब ओरल लीजन से कंपेयर करेंगे तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम लोग एरिथेमा मल्टीफॉर्म में भी कर सकते हैं. लाइकन प्लानस, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, एप्थिस अल्सर, focal atrophic candida lesions. So these are the differential diagnosis for herpes simplex infection. Now coming to the diagnostic workup, immunoslot testing to detect HSV1 circulating antibodies, viral culture and tissue biopsy, and murine monoclonal antibodies against HSV. These are the diagnostic workup for HSV infection. Now, coming to histopathology, the essential histological changes within skin and mucous membrane are seen for 3 infections, that is herpes simplex, herpes varicella and herpes zoster caused by herpes virus. तो ये तीनों इन्फेक्शन के लिए हिस्टोलॉजिकल चेंजेस जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं. द वेसिकल इनिशियली फॉर्म्स इन द prickle cell layer secondary to the degenerative changes. तो ये जो वेसिकल फॉर्म होते हैं वो prickle cell layer of the epithelium में फॉर्म होते हैं which is secondary to the degenerative changes. and ये जो वेसिकल फॉर्म होते हैं वो 2 फॉर्म्स लेते हैं. पहला is ballooning degeneration and second is reticular degeneration. So ballooning degeneration में क्या होता है, seen mainly in the floor of vesicle. It is seen mainly in the floor of vesicle. Okay. Causes expansion of the cell and the vesicle may bottom out so that it has a subepithelial rather than intraepithelial location. तो जो वेसिकल होते हैं वो बॉटम पे आ जाते हैं तो उनका जो लोकेशन होता है they have subepithelial location. Okay, what happened in reticular degeneration? It occurs essentially in the superior and lateral aspect of the vesicle. There is intracellular edema such that the epithelial cell rupture, leaving strand from the cell wall to form a multilocular vesicles. तो इसमें वेसिकल बन जाते हैं क्योंकि इंट्रासेलुलर इडिमा होता है और एपिथेलियल से रप्चर कर जाते हैं. तो 2 टाइप के डिजेनरेशन होते हैं. मेनली यू हैव टू रिमेंबर बलूनिंग एंड रेटिकुलर डिजेनरेशन.
Now, eosinophilic inclusions like lipstick bodies may be seen in nucleus, and the underlying connective tissue shows inflammatory reaction of varying intensity. That's all about the histopath part, treatment part. We will dealing in the next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.